हाँ। चलिए। गुड इवनिंग एवरीवन। आज डियर प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ डॉक्टर कविता चांदक नागपुर से हैं। जाना माना नाम है आप लोगों के लिए, इंटरनेशनल स्पीकर भी रही हैं और बहुत सारे इनके बुक्स भी मार्केट में हैं। वेलकम डॉक्टर कविता, हमारे प्लेटफॉर्म पे आने का अच्छा लगा। आप जैसी पर्सनालिटीज जब हमारे पास आते हैं और कुछ शेयर करते हैं और हमारी ऑडियंस भी आपसे कुछ सीखती है। वेलकम। थैंक यू मैम। तो हम टाइम नहीं जाया करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि बिल्कुल करेंगे। लेक्चर अच्छा होने वाला है। थैंक यू मैम। जस्ट स्टार्टिंग। ओके, इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? अभी शेयर हो रहा है बेटा। हाँ जी, यस। ओके, चलो ग्रेट। So let us start without wasting our valuable time. First of all, thank you host, thank you Promila ma'am for this invitation. Today I am going to talk about the victory of homeopathy in a complex case of cerebral atrophy and internet hazard. I presented this lecture even in the World Congress in 2023 at Bogota, Colombia, where I was invited speaker by LMHI. And it was a wonderful experience when the doctors around the globe came to know the remedy for this internet hazard. Later on, I got many mails regarding this for more info. That's why I already covered max to max info in this session. In July 2021, a young man aged 37 consulted me with the diagnosis of diffuse cerebral atrophy. By profession, he was CA, chartered accountant. His MRI brain screening showed mild prominence cerebral fossa suggestive of diffuse cerebral atrophy slash degeneration. You can see his report here and just concentrate on this slide. Mild prominence cerebral fossa suggestive of diffuse cerebral atrophy slash degeneration. This is very important line for us. He said, 8 years back, doctors diagnosed me as having degenerative changes in L5, S1 and 2 years back with cerebral atrophy. So first, degeneration happened in the spine, vertebral column, and later on it got diagnosed in cerebral atrophy. I have difficulty in walking, like I lose my balance and backache. My speech is not clear. I fumble. I have thyroidism for 3 years. Nowadays, I feel irritable. For 2 years, I have passed stool but have an unsatisfied feeling. See, he didn't say that I have constipation. Why? Because many of the times, usually, the patient has this perception that only hard stool is considered as constipation. But let me tell you, unsatisfied stool, insufficient stool, and even soft stool passed with difficulty, with long waiting, is also considered as constipation. He further said, I have sensitive throat to sour or cold food since my higher school days. My father had some degenerative changes in back. He was operated for that, and mother has asthma. I am sitting for a long time in my office using laptop and Wi-Fi. Till now, you might have understood the miasm, which miasm is basically acting behind the case. Because you see, we all have all the kingdoms and all the miasms present in our body, in our personality. But the issue is that when a patient consults a homeopath always consider the dominant kingdom and dominant miasm for the prescription. He further said, I am an introverted person. I keep everything inside me. By profession, I am chartered accountant. Please help me solving my issue. I asked him to add some more symptom
as he has any. Because you cannot prescribe the remedy on such small symptoms. Of course, we do in many cases, and we call them as one-sided disease. But if you can gather more and more symptoms, you can make a beautiful portrait from the totality, which actually tell you about the lurking miasm. And once you find out the miasm, it's easy to prescribe. He said, in my old job, we did not have toilet in our office. I had to hold urine for a long time. It was 1 year back. Now I switched my job. I asked him whether he switched the job for this reason only or he had some other problems. He said the working hours were too long and it was annoying to sit with computer for such long time. I was fed up with this monotonous routine, hence I changed the company. Now I have flexible working hours, toilet facility and less stress. But still degenerative processes going on in the body. The job is same, still working on computer. I feel heaviness in eyelids and head. There is drowsy feeling while talking. My vision is blurred. I feel exhausted and my stamina is not good. So from this totality, at least few medicines knock our brain. Now what should be the analysis and evaluation in this case? See, my sessions are always interactive. I do not like to keep on talking. I want you to put your inputs here. So according to you, what is to be treated in this case? Please put your inputs. Those who want to answer can open their microphone. Plumbum. Thank you, Dr. Jain, but I'm not asking about the remedy right now. What is to be treated in this case? डॉक्टर कविता, सबसे पहले तो इसके अंदर जो आपने लिया है एट्रोफी ऑफ ब्रेन जी डीजनरेशन, जी जी तो इसको तो मिस कर ही नहीं सकते क्योंकि ये बिल्कुल। सबसे एडवांस लेवल के अंदर आ रहा है। राइट राइट। ठीक है। और और जी, और मैं बताने लगा जी। अभी मैं थोड़ा मेंटल्स पे वर्क करता हूँ ज्यादा। हम्म, तो हम्म, इसके अंदर अभी तक जितनी आपने चीज देखी, दो चीजें मेरे को बड़ी स्ट्राइकिंग लगी। दैट हम्म, इज ही इज सीकिंग हेल्प फॉर, एक रूब्रिक है हमारे पास। हम्म, एंड सेकंड जो अभी आपने बताया, वो फेडअप हो गया है अपने जॉब से। बराबर। तो कभी भी जब फेडअप वाली सिचुएशन आती है, जब पेशेंट कहता है कि मैं फेडअप हो गया हूँ, चाहे वो ट्रीटमेंट के दौरान हो, चाहे हम्म, वो अपनी जॉब से रिलेटेड हो, हम्म, तो ये बोर्डरम एक टाइप ऑफ बोर्डरम है, राइट एनयूआई है। तो जब राइट। ये तीनों सिम्टम हम मिलाते हैं तो प्लम्बम मेडिसिन निकल के आती है। करेक्ट। और इसके बाद ऑरा, ब्राइटा कार्ब, कैंपर और आगे जो जो लिस्ट है ही है मेडिसिन जी की। जी लेकिन ये बिल्कुल। तीनों जो सिम्टम कवर कर रही है, ये प्लम्बम कवर कर। थैंक दैट्स यू ऑल फ्रॉम सो मी। मच। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन। आपका बहुत ही प्रॉपर ऑब्जर्वेशन है। एनीबडी एल्स कुछ और इनपुट डालना चाहते इसके अलावा? ऑडियंस प्लीज, अगर कोई बताना चाहता है तो आप स्टार्ट कीजिए कविता। ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, सबसे पहले तो हम इस केस में एनालिसिस करते हैं। तो व्हाट वाज माय एनालिसिस? ड्यूरिंग द इंटरव्यू आई ऑब्जर्व दैट degeneration is the keynote of this case, running right from the spine to the liver and brain. All other symptoms like heaviness in the eyes and head, blurred vision, difficulty speaking, imbalance while walking, etc., etc., are secondary manifestation of the degenerative changes. So, according to me, in this case, degeneration was my cup of tea, which I actually wanted to treat. His MRI cervical spine with spinogram study showed degeneration at L5-S1 with annular tear. If you will see here, fourth line from the bottom, just see focal herniation, annular tear, and extrusion and mild
cranial migration at L5-S1. Additionally, he has acute cholecystitis, diffuse fatty infiltration of liver, and grossly distended gallbladder. This is ultrasound abdomen talking about grossly distended gallbladder. I considered these rubrics. From the mind, I took reserved brain atrophy of head heaviness accompanied by heaviness in the eyes, eye heaviness leads, mouth speech difficult, abdomen fatty degeneration of liver. And from back, I took the rubric spinal cord complaints of spine, back degeneration spinal cord, and from general chapter, I considered tendency to degeneration of tissues and fatty degeneration in the organs. Now, which remedy is knocking your brain? See, I gave you ready platter. Yes, Samiksha ji. मेरे दिमाग में तो ब्राइटा का भी आ रही है सेरेब्रल एट्रोफी को देख के। पर ये बाकी रूब्रिक भी तो आप देख रही है ना मैम? रूब्रिक्स हाँ वो तो है एट प्रेजेंट, वो नहीं है मेरे पास रेपर्टरी, किसको रेपर्टराइज करके सामने लेके आऊं। थेरापेटिकली जो दिमाग में आया वो बता दिया आपको। Thank you so much. Head heaviness. When I considered this rubric, head heaviness, eyes heaviness, speech difficult. So first remedy in my mind came that was gelsemium. लेकिन yes, लेकिन रेपर्टराइजेशन में कुछ और ही आया। फॉस्फोरस, लाइकोपोडियम, प्लम्बम जैसे जैन सर ने बताया, जेल्सिमियम, नक्सोमिका, ऑरममेट, कोनियम मैक, mercury sol, agaricus, and picric acid came up. So all these remedies came up when I put all these rubrics in our repertory chart. Whenever there is degeneration, now you just tell me which remedy should I choose among all this list. जैन सर तो बता चुके प्लम्बमेट, इसके अलावा और किसी का इनपुट है तो बताइए। अगर डीजनरेशन के हिसाब से देखते तो ऑरम और पिक्रिक एसिड, क्योंकि जो भी सिफिलिटिक मेडिसिन है, इवन मर्कसॉल, राइट, तो उस पे जाएंगे। राइट, एनीबडी एल्स प्लीज? चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। Whenever there is degeneration, we usually think about phosphorus, and coincidentally in this case, phosphorus came at first place in my repertory chart. But I didn't prescribe phosphorus. It covers degeneration and fatty infiltration of liver, but it does not cover degeneration of spinal cord as well as the tendency of degeneration in tissues. It is good for organ degeneration, but it doesn't cover the tendency of degeneration in tissues. That's why I dropped this remedy. Then I chose vanadium mate and vanadium 30 given twice a day for 15 days. Now my question is that why vanadium? Let me tell you. I consider these two major rubric in this case, fatty degeneration organs as well degeneration of tissues tendency to. And I got two remedies. First is arsenic and second is vanadium in this case. Vanadium metal, it is very hard, silvery, gray colored metal. Initially, it is called as brown lead. Later named it as vanadium. Metals are obtained from mineral kingdom. Many wonderful remedies are prepared by potentizing the metals in our homeopathy. Metals have direct action on human physiognomy. They affect almost every vital system of body. Metals are also used as therapeutic agents. And it is present, this remedy is present at the center part of the left side on the top rows. 4th row, 5th column in the periodic table. And it is proved by Burnett. And its basic sphere of action is circulatory system, mucous membrane,
and its clinical indications are Addison's disease, anemia, arteriosclerosis, atheroma, emaciation, fatty heart, liver disorder, and malnutrition. So ultimately, I thought that I should go with vanadium. Now let me tell you something more about vanadium. Vanadium people have to be successful, but they are not allowed or they are incapable of that. They obliged to live up to too many tasks, but they are confused as to do what task, why and how to do. They don't really know what they want. They make plans, but they think I won't succeed anyway. They feel that they have to achieve a lot in their position, but they are not sure what. They are always doubting themselves and can't make choices. They are not strong enough to make decisions, and if they do make one decision, they doubt their choices afterwards. They have always a doubtful tendency and there is lack of confidence. They always ask to themselves, am I choosing the right profession? Am I a good person? Who am I? The doubt is a result of their fear of failure. The theme comes up in their dreams too. They dream of missing the train or not getting to the telephone on time, etc., etc. Their continuous doubting attitude is the reason that they don't complete things and or they are always late. This is a wonderful characteristic, one more characteristics I am going to explain you. The cause of this situation can usually be found in their upbringing. There is often successful and dominant father, like we see in carcinosin, like we see in folliculinum. Patients are under long parental domination. They are brought up very strictly with discipline, with the task of pleasing everybody, like seducing behavior, as we see in carcinosin, particular their own parents. They have to be good, caring, decent, and hard-working children. Like Natramur feels in his childhood. He keeps on pleasing others. Such a child won't dare to resist their reason and eventually won't know anymore what it wants for himself. It feels obliged to its duties but don't know the reason and purpose anymore. Somewhere similar to aurum mate now. If you read all the metals, you may find lot of similarities in many metals. Now the characteristic symptoms of vanadium are, it is a remedy for degenerative condition of liver and arteries. Acts as a tonic of digestive functions in early tuberculosis. Sensation as if heart was compressed, as if blood had no room in the aorta, anxious pressure on whole chest. And they keep on doing, like, they always like to keep their hand on the chest, as we see in Drosera. But Drosera always do this only while coughing. Fatty heart, brain softening, tuberculosis, cough is dry, irritating, and paroxysmal, sometimes with hemorrhage. Anorexia and symptoms of gastrointestinal irritation, irritation of nose, eyes, and throat. Anemia as well, arteriosclerosis is also very well covered by vanadium. Why I am explaining all these symptoms? Because when we use any remedy for any disorder in a case, it doesn't mean that the remedy has that limited scope. It has unlimited scope. So I always talk in my seminars, webinars, internationally, nationally, that we should consider all other symptoms also. Maybe you may strike some other case or any symptom may give you the path for your other cases. Now let me talk about arsenic album because it was the differential diagnosis remedy in this case. Arsenic covers fatty degeneration of heart and angina pectoris. Pulse more rapid in morning, liver and spleen enlarged and painful ascites and anasarca could be there. Phosphorus is very weak with all-gone sensation. Liver is congested, acute hepatitis. It is helpful in acute hepatitis. There is fatty degeneration, especially in heart with violent palpitation. Anxiety on lying on left side. Right side of heart is dilated
and feeling of warmth in the heart. When I gave this remedy to the patient, vanadium 30 twice a day for 15 days. Now see the follow-up after 15 days. 15 दिन पहले मेडिसिन डाली थी सेरेब्रल एट्रोफी पे, ठीक है। तो ये 15 दिन में मेडिसिन से कोई तकलीफ हुआ आपको? मैडम मेडिसिन से कुछ भी, जो आपने मेडिसिन दिया था वो मेडिसिन कंटिन्यू किया मैंने, तो उसमें मेरे को काफी रिलीफ हुआ। मतलब कि अगर परसेंटेज में तो 50% मेरे को उससे इम्प्रूवमेंट दिखा है। क्या इम्प्रूवमेंट दिखा 15 दिन में? जैसे मैं पहले चलता था, तो मेरा इम्बैलेंसिंग थोड़ा सा होता था। अच्छा। अभी मैं चल लेता हूँ, अगर बैक पेन होता है, पूरा मॉर्निंग वॉक 2.5 किलोमीटर का 2.5-3 किलोमीटर का होता है, और इवनिंग में 2.5-3 किलोमीटर वॉक। अब 2 बार वॉक को जा रहे हैं? पर पहले इतनी देर टहल पा रहे थे क्या? 15 दिन के पहले आप कितना वॉक कर रहे थे? मैडम मुश्किल से 1 किलोमीटर। अच्छा, और अभी 2.5 किलोमीटर। और डर नहीं लगता कि मैं गिरूंगा? कुछ नहीं, इम्बैलेंस कुछ नहीं होता है, एकदम कॉन्फिडेंट हो? सीधा चलता हूँ, कभी कभार थोड़ा सा होता है इम्बैलेंस, ओके। तो मैडम थोड़ा सा हो सकता है। हाँ। भैया वर्टिगो का क्या पोजीशन है? अभी वर्टिगो का कोई नहीं है। लास्ट टाइम ना एक कंप्लेंट आपका था भैया कि आंखें अपने आप आपकी पलकी गिर रही थी, टोसिस। नहीं मैम, कम हुआ है। कम हुआ है। पर अभी आंखों में क्या हो रहा है फिर? मैडम जलन हो रही काफी। हाँ। और बस विजन का थोड़ा सा ये है, और स्पीच ब्लर हो रही है, बैक पेन है। ओके। और एसिडिटी हो रही है। ओके। मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होना अंदर से, वो भी अभी बूस्ट हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अभी क्या ना कि पहले से भी थोड़ा ज्यादा एनर्जेटिक भी फील कर रहा हूँ। वेरी गुड। अभी मैं सेटिस्फाइड हूँ, वो जो दवाइयाँ लिया था उससे मेरे को बहुत इफेक्ट हुआ है। चलो बहुत। और एट प्रेजेंट मैं कोई भी दवाई नहीं ले रहा हूँ, इसके सिवा और कोई दवाई नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। So patient was happy in 15 days. So I thought that I should continue the same remedy, vanadium mid 30, again given twice a day for 30 days. Now see the follow-up after 45 days. अभी कैसे भी आप? मैम अभी ठीक है, मगर वही है, ज्यादा चलने में थोड़ा दिक्कत होता है बस। अच्छा। और अब थोड़ा सा घूमता है सर थोड़ा। अभी भी आपने को 1.5 महीना हो गया दवाई शुरू करके आपका? हाँ मैम, है ना? बिकॉज वी स्टार्टेड इट एट 28 जुलाई 2021 एंड टुडे इज 9 सितंबर। सो हाउ मच इम्प्रूवमेंट यू ऑब्जर्व? मैम मेरे को अगर इम्प्रूवमेंट अगर मैंने काउंट किया तो 60% के अराउंड है पूरा। ओके, थैंक यू, थैंक यू। It was very strange for me actually, and not a good thing, because in first 15 days patient said I got improved by 50%, and after 45 days he's saying that I got improved by 60% only. So something somewhere was going wrong. Vanadium was working well, but something was there which was not letting vanadium to work in full strength. What was that? I understood that I must address the obstacle in recovery. And that's why I love Organon. I keep on reading Organon every year, and I usually suggest everybody that they should read homeopathic philosophy at least once in a year. Because when you have obstacle to recovery, that is your maintaining cause, you can never achieve the cure. Patient said, I feel muscular weakness. There is occasional heaviness in the lids. I feel pain in upper part of eyebrows. All these symptoms started with my last job, where I used to sit for long hours working on computer. I used to read articles on phone for 2-3 hours daily. Now I reduced the reading time, but still using mobile phone to surf social media. Due to COVID lockdown, I started playing games on tab and phone. I changed the job now, but my work is same. So all the time he is under Wi-Fi. Hahnemann mentioned about exciting and maintaining causes in Aphorism 7. He wrote, we need to remove these obstacles to recovery to achieve the cure. For his muscular pain and headache, I was thinking of gelsemium. But what about the excessive exposure to electromagnetic radiation? It is also responsible for headache and eye symptoms. He was constantly under Wi-Fi for years at his working place and at the home also. Although there is very little established scientific evidence of adverse health effects from Wi-Fi exposure, but a homeopath knows how our energetic fields get diseased. So for me, it was very important point.
Toxic substance can leave an energetic imprint that lasts even after the material substance is no longer present, especially after long-term exposure to the toxin. Here, Wi-Fi is the toxin. Ultimately, radiation and foreign body has provoked an energetic imprint in the energetic system of the patient. So patient was suffering from all these disorders. What is this? This is the modern era miasms. Yes, toxins. In Hanuman's era, you see that time many things were easy. In his era, there were no pollution, no 5G, no radiation, and no stressful lifestyle as we are leading today. Today's modern era gave us a lot of comforts, no doubt, with a package of a lot of disease producing immunity brokers. With every modern high-tech device, we get hidden adverse effects. This is a study which said that repeated Wi-Fi study shows that Wi-Fi causes oxidative stress, sperm or testicular damage, DNA damage, endocrine changes, and calcium overload. This study was performed in 2018 March. The title was Wi-Fi is an important threat to human health. And the other study, which was performed in July 2020, says lifestyle, oxidative stress, and antioxidants. Back and forth in the pathophysiology of chronic diseases. Oxidative stress as a result of the imbalance between oxidative and antioxidative process in cells, therefore plays an essential role in the pathogenesis of numerous chronic degenerative disorders. So you ultimately got my point that Wi-Fi causes oxidative stress, which in turn is responsible for chronic degenerative disorders. Here, either electromagnetic radiation remedy, which counteracts the ill effects of radiation from computers, cell phones, television sets, power lines, household appliances, etc., etc., or Wi-Fi radiation remedy was my real need for this case. And finally, I chose Wi-Fi radiation 10 and I gave 1 aqua dose to the patient. These remedies are not proved traditionally. By simply reading the well-documented effects and adverse reaction of the drug in question, we have a comprehensive set of symptoms for each medication. Effects have been well studied and the medications have been used by humans on a large scale. So this source of this remedy is basically imponderabilia. Like we collect moon rays and we make the remedy. Like that, Helios company from London collected Wi-Fi radiation from the router and they prepare this remedy. Now see the follow-up after 60 days. भैया आज 23 सितंबर है, अभी स्पीच कितना इम्प्रूव हुआ? मैम पहले तो मेरा 5 मिनट में ही स्पीच फंबल होने लगता था, मतलब मैं किसी से बोलता था तो मेरे को खुद को अच्छा नहीं लगता था, बट अभी मेरा 10-15 मिनट तक की कोई फंबल नहीं होता। वेरी गुड, स्मूथली बात करता हूँ, बहुत ही बढ़िया। और ये आपको भी समझ रहा हूँ कि हाँ, यस। सो अभी होम्योपैथी में ट्रस्ट है मैडम? 110%। अच्छा, और भैया चक्कर अभी कैसे आपके? मैम अभी इम्प्रूवमेंट है, मतलब कि पहले जो मैं वॉक करता था उसमें मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, अभी अच्छा कॉन्फिडेंस है, मैं खुद ही हर चीज कर लेता हूँ। अच्छा, अपन एक करेंगे भी आपका ब्रेन का वापस से एमआरआई, लेकिन इतनी जल्दी 1.5 महीने में हम एनाटॉमिकल चेंजेस नहीं दिखा सकते सेरेब्रल एट्रोफी में, मे भी आगे भी ना दिखा पाए, लेकिन एटलीस्ट फंक्शनल चेंजेस आपकी बॉडी में आने शुरू हो गए, तो अपना लाइफ तो रूटीन होना शुरू हो गया। थैंक यू सो मच भैया, थैंक्स टू होम्योपैथी। Now what should be the prescription at this moment? Patient is doing well. Come on, doctors. Sonika, I already answered the Helios company from London.
Dr. Akhilesh said placebo. Okay. Anybody else? Dr. Parvati said picric acid. Okay. यदि इम्प्रूव कर रहा है आई थिंक रिपीटिशन तो जरूरत नहीं होगा, या कोई एंटीमाइजमेटिक रेमेडी देना चाहोगे? ये आप बताइए, आप पेशेंट आपका है, मेरे पास से अच्छा। तो निकल चुका है। नहीं, अच्छा, मेरे ख्याल से तो अगर वो बेटर हो रहा है तो प्लेसिबो पे ही रख लें फिर। अच्छा, और किसी का कोई ओपिनियन? हेलो डॉक्टर समीक्षा, मैंने डॉक्टर विजयकर से ही एक बार सुना था, कभी भी जिससे जो ये डायनेमिक स्फीयर होता है उसका कुछ भी बॉडी पे इफेक्ट है तो सीपिया सर ने प्रिस्क्राइब की थी। तो आपका ओपिनियन है सर अभी सीपीए के साथ जाओ? अगर वाईफाई ऑब्स्टेकल है और उसको हमने एंटीडोट करना है, अगर उसका, क्योंकि डायनेमिक इफेक्ट ही आएगा ना उसका, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आएगी। नहीं, बट ये केस में जी। तो मैंने वाईफाई रेडिएशन ऑलरेडी डाल दिया है, जो मुझे सही लगा, उसके मुझे रिजल्ट भी बहुत बेहतर आए। अभी एट दिस मोमेंट क्या करना चाहिए जब पेशेंट इज इम्प्रूविंग? वेट एंड वॉच ही है। ओके, see, I put again 1 dose of Wi-Fi radiation remedy, but again in aqua. As things were better, I thought to continue the same remedy just for speedy recovery, because last dose also we put in aqua. Now see the follow-up in November, almost 120 days from the first consultation. मैम ये जो मेडिसिन चालू था इसमें मेरा थ्रोट का मतलब मेरा स्पीच क्लियर नहीं आता था। अभी आपको इस दिख रहा होगा कि मैं एकदम फ्लुएंटली अच्छे से बात कर रहा हूँ, मतलब ये बहुत शॉर्ट हो गया, अब तो 70% क्लियर हो गया ये। वेरी गुड। और यहाँ तक कि मेरे को लगता है मैम कि जो आपने मेडिसिन शुरू की इससे ब्रेन वगैरह का जो भी मेरा इशू था वो भी सॉर्ट हो रहा है। अभी इससे मेरे को बैक पेन का इशू लगता है। So right now his main concern is about his backache. Speech, balancing and vision issues are already settled. Hence I decided to put the remedy on the tendency of degeneration. With Wi-Fi radiation remedy, I tried to detox the adverse effects of Wi-Fi radiation and internet use from his vitality. Why I used Wi-Fi radiation remedy here? Because if you get the correct remedy as per the causative factor, and if they both are matching equally, then it is a wonderful remedy for the current situation and it works like anything. For example, if you are tampering a patient of convulsion or epilepsy from the valprine, then we have valprine in homeopathy. That really helps. It's my personal experience. So like that, Wi-Fi radiation remedy has already worked here and it helped in detoxification. Now, my need was a remedy which can arrest the tendency of degeneration. Sometimes we start with appropriate medicine, but if you put quality seeds in dirty soil, it won't turn up in a healthy plant. Hence, I again put vanadium mate, this time in 200 C 1 dose every 15 days for 2 months. So almost total 4 doses of vanadium 200 C, because it was his original remedy which was helpful in covering the degenerative process, and degenerative process was the keynote of this case. Now see the follow-up in February 2022. Sorry. We did this MRI brain, and on 16th Feb he did it, and he met me on almost 1 or 2 days after that. MRI brain study reveals diffuse cerebral atrophy, but the word degeneration is missing here. In our first report, it was cerebral atrophy / degeneration. In the second report, degeneration word was not there. Atrophy is an irreversible change. You can help the patient functionally, but you can't do anything structurally, anatomically for the atrophy. Atrophy reduces the size of the cell under consideration while conserving its form. Degeneration either eliminates the cell completely or so alters its form that its specific differentiation is no longer recognizable. Degeneration
you can turn the degenerative changes into regenerative changes, but you cannot change the report of atrophy. But my patient was very well because I was successful in removing the degenerative process from his personality. Now see his next video. भैया आज का आपका जो रिपोर्ट देखा है ना ब्रेन का अपन ने, इसमें सेरेब्रल एट्रोफी तो बता ही रहा, क्योंकि एट्रोफी इज इरिवर्सिबल चेंज, तो उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन फंक्शनली ब्रेन का अपन ने इम्प्रूवमेंट किया है होम्योपैथी मेडिसिन ने, लेकिन उसके अलावा आपका फंक्शनिंग कैसे बदला? मैम देखिए, अब ये तो रिपोर्ट एक जो बोल रही है वो अलग बात है, बट मेरे को पर्सनली ऐसा फील होता है कि मैं अभी पहले से ज्यादा अच्छा फील कर रहा हूँ। मेरे को बहुत सी तकलीफ जो पहले थी बिफोर कमिंग टू योर क्लिनिक, मेरे को जो तकलीफ थी अभी बहुत कम हो रही है, ऐसा लगता है। भैया हम जब मिले हैं 28 जुलाई 2021 को, और अभी ऑलमोस्ट 24 फरवरी 2022 चल रहा, तो इट इज ऑलमोस्ट 6 मंथ्स। तो ये 6 मंथ में हाउ मच रिकवरी यू गॉट विथ अवर मेडिसिन? काफी इम्प्रूवमेंट है मेरे में पहले से। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, आपने ट्रस्ट किया, थैंक यू। You can see here one more thing. If you read this report carefully, there is no word annular tear. See the first report where you can see the annular tear word from the 4th line from bottom, and in second report annular tear word is missing here. Annular tear is not easy to treat. Basically, it can never be treated with any type of medicine. In other modern school, they usually prefer some traction and other methods, but still it is incurable. But homeopathy finally cured it. Now let me tell you the strategy to deal with the neurological cases, because you see neurological cases are little difficult, and this case was not only neurological case, it was neurological as well musculoskeletal case. So let me share. But before that, I have one suggestion for you. If you see in the repertory, the rubric in mind, computer love for, you will see the remedies are there. There is one more symptom, mind playing desire to play Nintendo, mind playing desire to play Scrabble, because that time maybe only these games were available, but you can use these remedies for any type of computer addiction. And the top remedies are Silicea, Buforana and sulfur. I repeat, Silicea, Buforana and sulfur. Now let me explain you about the strategies to deal with the neurological and musculoskeletal disorder. First of all, we need to pay attention to the keynote symptoms. What is the keynote symptom in this case? That was degenerative process. Then remove the maintaining or exciting cause. What was the maintaining cause in this case? Wi-Fi radiation. You see, you cannot say the patient, oh my God, don't use Wi-Fi. It's not possible in modern lifestyle, because we are also talking by using Wi-Fi right now. So every science or all the electronic digital things are basically useful, but at the same time, they have a lot of adverse effect. So now it depends on us how we use them. I usually suggest my patients that at least turn off the router in the night time, and then you can start it again in the morning. So first of all, you just need to try, and it is mandatory to remove the exciting or maintaining cause in all types of neurological as well musculoskeletal disorder. Then you can suggest physiotherapy or massage if needed, because when you have the patient suffering from neurology, like for example, if this patient may be suffering from lot of backache, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है मैडम बैकएक, तो आप फिजियोथेरेपी भी साथ में सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे भी हमारे पास जितने भी न्यूरो के पेशेंट है, मेरे पास न्यूरो सेक्रेटरी की केसेस सबसे ज्यादा रहते, तो आपका सीपीएमआर का भी पेशेंट रहेगा, तब भी आपको उसको फिजियोथेरेपी सजेस्ट करनी पड़ती है। फिजियोथेरेपी एक्चुअली हेल्प्स, कोई भी थेरेपी हो वो तब तक हेल्प करता है जब तक आप उसको ले रहे हैं। जैसे हम ऑटिज्म में भी देखते हैं, बच्चे एबीए में जाते हैं, कॉग्निटिव थेरेपी में जाते हैं, स्पीच थेरेपी में जाते हैं, लेकिन ये जो चीजें ये सिर्फ टेम्पररीली सपोर्ट करती है और कुछ समय के बाद में बॉडी उसको भी रेजिस्ट हो जाती है, बिकॉज until and unless you won't change the neurotransmitter in the brain in neuropsychiatric cases, especially in autism or ADHD, you are not going to change the child.
You're not going to transform the personality. Like that only, in neurological cases also, you may suggest physiotherapy to your patient, but ultimately you have to give him the remedies, appropriate remedies. Then go back to the originally selected remedy after removal of obstacle to the recovery. That is very important thing. Usually, other homeopaths do one mistake, which I observed in my all seminars, that they do not go back to the root and they do not continue that remedy. You need to do that. Once you remove the obstacle, once you remove the toxins in the case, it's a better time to go back to the root remedy. That will definitely help you. Thank you so much for your patience listening. This is all about today's session. These are my books present on Amazon, available on Amazon and Flipkart also. Just put my name, you will get the list of my book. This is one more book, Healing Woman with Homeopathy. It is available on Bijan's site as well on Amazon. And this book, Healing Woman with Homeopathy, already got published in Czech Republic language as well in Turkish and Russian language. Thank you so much for your patience listening. Yes, I am here. If you have any question, please feel free to ask me. Thank you so much. Thank you, Promila ma'am. हाँ जी ऑडियंस, अगर कोई कुछ पूछना चाहता है तो प्लीज कम फॉरवर्ड, अपना वीडियो अपना ऑन कीजिए। आई थिंक नो वन इज हियर। थैंक यू, कहीं आ रहे हैं। इतना बोर था कि सेशन की कोई क्वेश्चन ही नहीं निकला। नहीं, जरूरी नहीं होता, कई बार सब समझ आ जाता है। एक्चुअली मुझे भी अपने लेक्चर के बाद ऐसे ही लगता है कि यार अपने समझ आया कि नहीं आया, कुछ आंसर ही नहीं आया। क्योंकि यूजुअली आई गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर माय सेमिनार। कई बार होता है कविता के हमारा ना सेशन ऐसा होता है कि रिलेटेड जो सुन रहे होते हैं ना लोग, वो उस कैच कर लेते हैं। सब्जेक्ट के साथ रिलेट यस नहीं होते, यस है ना, उनके लिए न्यू होता है। जब वो चीज न्यू होती है तो आप उसको पहले अडॉप्ट करेंगे, यूज करेंगे, फिर सवाल आते हैं, राइट राइट। है ना। नहीं तो फर्स्ट टाइम तो ए फॉर एप्पल सबके लिए है, बाद में पता लगता है कि एप्पल तो बहुत सारे एप्पल होते हैं, फोन भी एप्पल होता है, फ्रूट ही एप्पल नहीं होता, है हम्म, तो अगर कोई क्वेश्चन ना हो तो आई वुड लव टू लीव, बिकॉज मेरा क्लिनिक का टाइम हो रहा है मैम। कोई सवाल है? आई थिंक कोई नहीं है। मैम थैंक यू। देयर इज अ क्वेश्चन, देयर इज अ क्वेश्चन। मैम जैसे आपने बोला कि डोमिनेटिंग फादर होता है तो उसमें वेलेडियम अच्छा काम करती है। मैंने यस, वेनेडियम हैज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने ये नहीं बोला कि डोमिनेटिंग फादर होता है तो वेनेडियम ही काम करता है। मैंने आपको उसके साथ में कार्सिनोसिन भी बताया, फॉलिक्यूलिनम भी बताया। अच्छा, तो मतलब ऑल दीज थ्री रेमेडीज हैविंग डोमिनेटिंग फादर, और मतलब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि समवन बॉर्न लाइक अभिषेक बच्चन इन द फैमिली ऑफ अमिताभ बच्चन। हम ये नहीं और बोल सकते और बेटा, क्योंकि हमको ये नहीं पता कि अमिताभ बच्चन जी कितने डोमिनेटिंग फादर है। नहीं मतलब नॉट ऑलवेज डोमिनेंस, बट बोल सकते हैं कि वो शायद अपने काम में इतने परफेक्ट हैं कि जब दैट इज बच्चा डिफरेंट थिंग बेटा, वंदना, दैट इज डिफरेंट थिंग। देखो वो परफेक्ट है, ऑब्वियसली पीपल मेक द कंपैरिजन। जो अमिताभ जी से एक्सपेक्ट करते हैं वो अभिषेक नहीं दे पाए या नहीं दे पाएंगे, क्योंकि लोग उनके अंदर उनकी छवि को ढूंढते हैं। दैट इज डिफरेंट थिंग। बट ये जो रेमेडीज है, इसमें एक्चुअली अपब्रिंगिंग एक अंडर डोमिनेशन होता है, इसलिए बच्चा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जाता है। ये तो हम अमिताभ जी को ऐसे ब्लेम तो नहीं कर सकते, नहीं नहीं इंडिया में रहना है। मुझे एक्चुअली में मुझे वही पूछना था कि इधर इधर फादर क्या इतने ज्यादा परफेक्ट है इसीलिए ये ऐसा लैक ऑफ नहीं कॉन्फिडेंस है, देखो, या फादर हाँ एग्जैक्टली डोमिनेटिंग है इसीलिए नहीं, इतना। एग्जैक्टली डोमिनेटिंग रहते हैं। जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी स्ट्रिक्ट। तो उनका एक फिक्स होता है कि ये चीज ऐसी होनी चाहिए, वो चीज वैसी होनी चाहिए। और अभी भी मैं अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है वो बोल नहीं पाते हैं पेरेंट्स के सामने। अभी भी हमारे इरा में तो हम बोल ही नहीं पाते थे, वो तो अलग ही चीज था। अभी के बच्चे एटलीस्ट बोलते, बिकॉज फादर्स आर टू फ्रेंडली नाउ। लेकिन हमारे इरा में हम बोल नहीं पाते थे। बट इसका मतलब ये नहीं था कि हम डरते थे, ये रिस्पेक्ट था, वो चीज अलग हो गया। लेकिन कई बार होता है कि फादर बहुत चिड़चिड़े एंग्री पर्सन होते हैं, घर में डोमेस्टिक वायलेंस होता है, हस्बैंड बहुत ही इरिटेटिंग है। तो वो केस में जो बच्चा पनपता है उस माहौल में, उसको फादर के डांटे बिना भी डर बैठा रहता है
कि मैंने कुछ गलत किया तो फादर इज गोइंग टू बीट मी नाउ, तो वो चीज अलग होगी बेटा। लेकिन अगर बच्चा उनको सिड्यूस करता है, फादर को या पेरेंट्स को, कि भाई मैं देखो आपको मैं हैप्पी कर रहा हूँ, प्लीज कर रहा हूँ, आप मेरा काम कर दो, या मैं अगर सबको प्लीज करूंगा तो आई विल गेट द अप्रिसिएशन, दे विल नोटिस मी, लाइक दैट एज यू सी इन नाइट्राम्यूर। ये डिफरेंस है दोनों में का। तो डोमिनेटिंग फादर अगर है तो बच्चे का लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, वहां पे आपको वेरेट्रम सॉरी वेनेडियम, कार्सिनोसिन और फॉलिक्युलिनम काम आता है। लेकिन अगर फादर का रिस्पेक्ट है और उसकी वजह से बच्चा डिसिप्लिन्ड हुआ है, तो आपको ऑरमेट काम आता है, समझा। और अगर फादर बहुत ज्यादा, एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि फादर बहुत लविंग है, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट है, फैस्टिडियस है, और बच्चा अपने आप उस चीज के वजह से फादर की इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है कि उनके सामने बैठेगा नहीं या कभी वाइन नहीं पिएगा। लाइक इफ यू वॉच द मूवी संजू, संजू मूवी आप देखिए तो आपको आपका मेडोरिनम का पिक्चर उसमें मिलेगा। हम्म? तो जब भी मैं मूवी देखती हूँ मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ, मुझे मेरे उसमें होम्योपैथी की पर्सनैलिटी मिल जाती। ठीक है, एनी मोर क्वेश्चन? और मैम आपने जैसे सेरिब्रल एट्रोफी के बारे में बोला था, तो उसके बारे में, क्योंकि थोड़ा सा एलोपैथिक में जो डॉक्टर्स होते हैं जनरली न्यूरो सर्जन्स वगैरह, मतलब आपका पेशेंट तो खैर 40 इयर्स ऑफ एज में था, उसको तो खैर ऐसी प्रॉब्लम ही थी। बाकी अगर वही पेशेंट 60 में होता तो देवर से कि ठीक है वो नॉर्मल है और वो एक एजनिंग की वजह से, तो उसको कुछ इतना ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, और वो मतलब एलोपैथिक में भी नहीं ही ट्रीट होता है एट्रोफी, मतलब बराबर जो। है ना। तो देखो, हाँ एवरी साइंस थी वंदना, नो साइंस इज बैड और गुड, एवरी हाँ साइंस हैज फ्यू स्कोप एंड फ्यू लिमिटेशन, दे हाँ आल्सो हैव लिमिटेशन, दे आल्सो हैव लिमिटेशन। और हाँ, एट्रोफी तो हम और आपके और कोई साइंस के भगवान भी ठीक नहीं कर सकता। नहीं तो वो एट्रोफी नॉर्मली। तो इरिवर्सिबल चेंज है, वो ठीक नहीं होता, बट फंक्शनली पेशेंट ठीक होता है। बट आप जो ये बोल रहे हैं कि 60+ एज है एट्रोफी, उसे सेनाइल एट्रोफी कहते हैं बेटा, जो एक एज के साथ में सबके साथ होता है, जहाँ ब्रेन थोड़ा श्रंक होता है। लेकिन इंडिया में उसके बाद में भी अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में 80 इयर्स के भी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो हाँ क्या रे। उनका सेनाइल एट्रोफी ऑफ ब्रेन नहीं हुआ था क्या? फिर वो कैसे देश को रन कर रहे थे? तो हाँ कई बार ये होता है कि एट्रोफी एक चेंज है जो होता है, अगर एज वाइज भी, तो भी आप उसके अंदर से निकल सकते हैं। उसके अलावा फंक्शनली आप वर्क कर सकते हैं। और कई इसकी बार। मैं एग्जांपल दूंगी वंदना। बेटा हाँ हाँ जैसे इन्होंने बताया बताया कि 80 इयर्स के भी हमारे रह चुके हैं। जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे सर बोलते थे, डॉक्टर कोचर, कि ब्रेन में जो ग्रे मैटर होता है आपको उसकी फंक्शनिंग बढ़ानी है। जैसे ही आप इसकी एज में आते हो उसके बाद अगर आप अपने कैलकुलेशंस, है ना, मल्टीप्लीकेशंस, ये एडिशन सब्ट्रैक्शन, या आप कुछ ऐसा काम करना शुरू कर दो जिसमें दिमाग लगता है, जिसमें मेमोरी आपकी स्ट्रांग हो, तो आपकी एट्रोफी नहीं होती है जल्दी। आप एक मैं एग्जांपल देती हूँ बड़ा स्ट्रांग। हमारे साइंटिस्ट हैं आइंस्टाइन, ही है वाज ना। ऑटिस्टिक, सबने ही वाज सबने नाम ऑटिस्टिक इन सुना है चाइल्डहुड। आइंस्टाइन का। यस। आइंस्टाइन का सबने नाम सुना है। आप अगर देखोगे कि वो जब पैदा हुए थे तब उनका ब्रेन इतना वर्क नहीं करता था। जैसे वो थोड़ा सा बड़े हुए थे 10-12 साल के बाद, तो उनकी कैलकुलेशन ज्यादा 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 स्ट्रांग होने लगी थी। क्यों? उनका भी जो वो सेरिब्रम था ना, वो साइज जो था वो कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा था। जब बाद में उनकी डेथ के बाद एक डॉक्टर ने उनका ब्रेन को रख लिया था रिसर्च के लिए कि इतनी मेमोरी कैसे हो सकती है, इतना ब्रेन फंक्शन स्ट्रांग कैसे हो सकता है। तो इट्स अप टू अस के हम किस तरह से यूज कर रहे हैं, उसमें कैसे हम उसको बढ़ा सकते हैं। ये यस मैम, साइंस ही है। यू आर करेक्ट मैम। ब्रेन का एक रूल है वंदना, यूज इट और हाँ, लूज इट। और आइंस्टाइन बिल्कुल वाज ऑटिस्टिक व्हेन ही वाज बिल्कुल। चाइल्ड, ही वाज ऑटिस्टिक। एंड ऑटिज्म का एक रूल ऑटिस्टिक थे होता वो। है कि इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होता है, इवन मोर बिल्कुल देन उसका आईक्यू जो रहेगा वो 110 के ऊपर मिलता है। मेरे भी इतने बिल्कुल। सारे ऑटिस्टिक पेशेंट है, उनका आईक्यू 110 से ऊपर है। बट द हम्म। ओनली इशू इज दैट दे डू नॉट नो हाउ टू use this intelligence in the behavior. That's why we say that autism is a behavioral disorder. लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। इंटेलेक्चुअली तो गॉड ब्लेस, हाँ जी। आइंस्टाइन, बिल गेट्स, मोजार्ट, ये सब ऑटिस्टिक थे और आज दुनिया इनको जीनियस बोलती। आई विश मैं ऑटिस्टिक होती चाइल्डहुड में। फिर हमारे डॉक्टर साहब होम्योपैथी हम में ब्राइटा काब एक ऐसा एग्जांपल है जिसको हम डल डफर बोलते हैं, लेकिन अब ब्राइटा काब की अगर बहुत पोलैरिटी में देखो, इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है वो। इंटेलिजेंट है, बराइटा बहुत इंटेलिजेंट है। डलनेस हम्म, सिर्फ उसका एक पिक्चर है। जिसको एक्चुअल बराइटा कार्प का स्टडी है उसको मालूम है कि बराइटा बहुत इंटेलेक्चुअल है, बट द बिल्कुल। ओनली इशू इन बराइटा इज दैट दे डू नॉट नो देयर बाउंड्रीज।
उनको अपनी बाउंड्रीज नहीं समझती, इसलिए जो बिल्कुल। उनका इंटेलिजेंस है ना वो मूर्खता में बह जाता है, ये प्रॉब्लम। वंदना, मेरा मुझे कॉल करना बेटा, मैंने 2-3 दिन से आपको देख रही हूँ कि आपके कुछ सवाल आपके ऐसे आते हैं जो मुझे लगता है कि वो सारे करेक्ट होने वाले हैं। आप एक बार मुझे कॉल करना वंदना। ठीक है मैडम, ठीक है। हाँ चलिए मैम, आपका परमिशन हो तो कैन आई लीव हाँ नाउ? जी, श्योर श्योर, डेफिनेटली जी। थैंक यू थैंक यू कविता। सो मच। थैंक यू थैंक मैम यू फॉर डॉक्टर बीइंग कविता। बुलेट। थैंक थैंक यू। यू डॉक्टर जैन, आपका बहुत अच्छा इनपुट था, थैंक यू सो मच। ऐसा लग रहा थैंक था कि सेशन इंटरेक्टिव बना है आपकी वजह से। थैंक यू। ओके। थैंक सी यू यू। ऑल, बाय साक्षी। बाय। जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। जय हिंदुस्तान। जय हिंदुस्तान। ओके जी, बाय बाय। स्टॉप कर दूं रिकॉर्डिंग? हाँ जी हाँ जी बेटा, पहले लाइव बंद करिए, लाइव भी बंद कर दो बेटा। ओके ओके ओके। कहाँ पे सेव होता है पता है ना रिकॉर्डिंग्स? हाँ पता है। बस ठीक है।